Hello students, welcome. This is Dr. Sagar Gore and we will study the biology part from your science. Students, up to this standard you might have studied the science very well. You know what is environment, what we find in ecology. So everything you know what we find around us. Now we are going to upgrade ourselves. हम अपने आप को कुछ आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट? सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, हम 8th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आपको ये मालूम ही होगा कि क्रॉप क्या होता है और एग्रीकल्चर बेसिकली क्या होता है। देखिए, जो लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जिनके पास खेती है, दे ऑल नो दैट व्हाट इज एग्रीकल्चर, हाउ उसमें काम कैसे किया जाता है, how the seeds are sown and how the crop is taken, how it is produced. Okay, so many of you might be the students who don't know that where the groundnuts come. So कहाँ से हम उसको ले सकते हैं, वो कहाँ पर आते हैं, या बहुत लोगों को मालूम भी होगा. So who know about this everything, so they are always congratulations and welcome. Okay, so student देखते हैं चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में. तो क्रॉप क्या होता है, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है और मैनेजमेंट क्या होता है. तो जो क्रॉप आता है स्टूडेंट, तो हम हमेशा उसे खेत में लेते हैं, इसलिए इट इज ऑलवेज रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर. ओके, सो मेनी ऑफ यू माइट बी फ्रॉम द एग्रीकल्चर families, their background will be agriculture, and many of you might be some who don't know that how agriculture is done, how crops are produced, how they are sown and how they are harvested. ये शायद आपको बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं भी होगा. चलिए आज पढ़ लेते हैं कि किस तरह से प्रोडक्शन मैनेजमेंट किया जाता है. ओके, सो हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, उसके क्या क्या प्रैक्टिस की जाती है, कैसे कैसे क्रॉप्स को लिया जाता है और क्रॉप्स के कौन से टाइप होते हैं. देखिए, समझो कि दो ऐसे लोग हैं, जैसे कि है, मैं कहता हूं पहेली. ओके, देखते हैं कौन है. एक पहेली नाम की लड़की है और दूसरा है बूझो. ओके, बहुत ही अजब नाम है इनके, पहेली और बूझो. ऐसे दो लोग हैं, मतलब भाई बहन है. अभी अंकल के घर जा रहे हैं, उनके अंकल के घर गए, वहां पे उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे टूल्स पड़े हुए हैं. जैसे कि वहां पे उन्होंने देखा कि खुरपी पड़ी हुई थी, खुरपी थी, फिर सिकल होगा, ओके, होगा, फिर प्लो भी था वहां पे. तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स? इन्हीं को हम कहते हैं टूल्स. ये टूल्स बहुत जरूरी है. हम खेती में काम कैसे करेंगे? वी विल वर्क विथ ऑल दोस टूल्स. सो खुरपी हो सकती है, सिकल, इट माइट बी हो, इट मे बी प्लो. सो प्लो, ऑल दिस टूल्स, विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस टूल्स वी वर्क इन अ फार्म, एंड दैट्स व्हाई these are called the tools for performing any work. तो ये वहां पे गए, उन्होंने ये सब देखा. After seeing all this, they asked their uncle, "Uncle, what is this?" So uncle said, "Beta, these are tools. These are used in farming." Okay. So they have some question in their mind that why we do farming? Farming हमें क्यों करना पड़ता है? बोलिए, क्यों करते हैं हम फार्मिंग? क्योंकि पहले जो हमारे ट्राइब्स थे, हमारे पूर्वज थे, हमारे प्रिमेटिव मैन थे, हमारे इंसेस्टर्स थे, वो सभी कैसे थे? वो सब सारे नोमैडिक थे, नोमैडिक. सो दे वेयर ऑफ अ वंडरिंग ट्राइब. सो दे वो वंडरिंग थे. सो दे वेर नॉट यूज्ड टू ईट फूड लाइक अस. दे वेर नॉट यूज्ड टू कुक फूड. सो व्हाट दे वर डूइंग? दीज nomadic people, they used to hunt. So they were doing hunting. They were hunting the animals and they used to take raw food. Raw food. This food used to be raw. So they were wandering for food and shelter. And after some time they knew that there is something like fire. So there was the invention of fire. And finally they found कि ऐसा हंटिंग जो हम करते हैं उसको अगर हम पका के खाते तो उसकी टेस्ट मस्त आती है. इसलिए फिर उन्होंने वो पका के खाना शुरू किया. और फिर उसके बाद ये सभी एनिमल अलग अलग फूड खाने लगे. फिर उसमें डेवलपमेंट हुई और फिर अब क्या आ गया? आप लोग खाते हैं वो चाइनीज, बहुत कुछ आया है. तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये डेवलप होते गए हम.
ये सब डेवलप हुए तो उसके बाद अभी हम क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। फूड, जो कुछ हम ले रहे हैं वो खाने के लिए जरूरी है। सो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस फूड, व्हाई वी ईट, व्हाई वी टेक फूड, बिकॉज वी नीड सम एनर्जी, बिकॉज वी नीड सम एनर्जी। इस एनर्जी के लिए हम फूड लेते हैं। बिकॉज इफ यू कम टू क्लास विथ एम्प्टी स्टमक, आफ्टर सम टाइम यू फील दैट यू आर हंग्री, तो आप बैग में से चॉकलेट निकालते हो, फिर खा लेते हो। ये क्यों होता है सब, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, आपके ब्रेन ने एनर्जी खा ली। तो ये सब एनर्जी खाने के कारण आप अभी एनर्जी चाहते हो, उसके लिए आप फूड खाते हो। इसका मतलब हमें फूड कौन देता है, फूड कहां से मिलता है, तो ये एनर्जी फूड से मिलती है। लेकिन फूड कहां से मिलता है, ये एक चीज है। तो देखिए, या तो हम क्या खाएंगे, प्लांट्स में से क्या मिलता है हमें एक तो ग्रेन मिलता है, ग्रेन मिलेगा, नहीं तो आपको कुछ फ्रूट्स मिलेंगे, कुछ वेजिटेबल्स मिलेंगे। तो इनको खा के आप अपना जो कुछ लाइफ है वो चला लेते हो। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स, वेयर डज दिस प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम, सो दीज फूड्स गेट देयर फूड फ्रॉम सनलाइट। I mean, they use this sunlight to produce their own food, and finally they produce food with the help of photosynthesis. Keep this in mind that photosynthesis is the process through which they produce food. और इनको फिर ये फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, ग्रेन आते हैं, और वही ग्रेन को फिर हम लोग खाते हैं। तो इस तरह हमारा फूड तो चल जाता है। लेकिन नाउ क्वेश्चन इज कि क्या हम लोग सिर्फ इतने ही हैं, मतलब जितने क्लास में दिख रहे हैं, या औरंगाबाद में हैं, या फिर महाराष्ट्र में हैं? नो। सो वर्ल्ड वाइड देयर आर so many people, so the population, what we call it as a population. So student, you know that the population is another one question that is being worried by all of us. Population. This is not only the population, but it is an increasing population. Tremendous increase in the population every year. That is the reason of worry. ये हम सोच रहे हैं कि ये पॉपुलेशन का पेट कैसा भरा जाएगा, और इसीलिए हमें क्या चाहिए, इसीलिए हमें चाहिए प्लेंटी फूड, प्लेंटी ऑफ फूड, बहुत सारा फूड हमें चाहिए। ओके स्टूडेंट, ये फूड हम कहां से लेंगे? क्या इतना ही होगा, जितना हम खा रहे हैं उतना ही चाहिए? नहीं, सभी को फूड चाहिए, इसलिए बहुत सारा फूड चाहिए। तो जितना हम पका रहे हैं उतना तो यूज हो रहा है, तो फिर इतना फूड कैसा तैयार करेंगे? तो ये जो बहुत सारा फूड हमें तैयार करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेरी सिंपल, हमें करना पड़ेगा फार्मिंग ही। लेकिन कैसा फार्मिंग? एडवांस्ड फार्मिंग, एडवांस फार्मिंग करना पड़ेगा। एडवांस फार्मिंग मतलब समझिए कि पहले कुछ एरिया था ऐसा छोटा सा, कुछ जगह थी जहां पे समझो 100 kg इतना गेहूं निकलता था, इतना व्हीट निकल रहा था 100 kg। समझिए एरिया था 1 एकड़ का। ओके, 1 एकड़, इसमें 100 kg व्हीट निकलता था। अभी जब आप एडवांस फार्मिंग करेंगे, उसमें अच्छे से मैन्योर डालेंगे, फर्टिलाइजेशन डालेंगे, उसको पेस्ट कंट्रोल करेंगे, ये सब करने के बाद क्या होगा? ये 100 kg बढ़ जाएगा और फिर ये 250 kg बन जाएगा। तो एरिया तो उतना ही है, 1 एकड़ ही। 1 एकड़ एरिया में ही आप 250 kg ग्रेन निकाल रहे हो, क्रॉप ले रहे हो। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट यू आर नाउ एडवांस्ड, यू हैव पुट समथिंग विच थ्रू विच यू गॉट मोर प्रोडक्शन, मोर क्रॉप। ओके, सो ये क्रॉप क्या होता है? क्रॉप क्या होता है? देखिए, ये आपको समझ में आया? फिर रिवाइज करता हूं मैं। देखिए, ये पहली और बूजो थे जो अपने अंकल के घर गए, वहां उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखे, जिसको उन्होंने क्या कहा? टूल्स। अंकल ने बताया कि भाई ये टूल्स हैं, यूज हो रहे हैं, ये फार्मिंग के लिए यूज हो रहे हैं। तो फार्मिंग आया कहां से? तो देखिए, पहले नोमैडिक पीपल थे, फिर वो यहाँ वहां घूमते थे शेल्टर के लिए, फूड के लिए, फिर हंटिंग करते थे, और जो कुछ रॉ मटेरियल होगा उसको वो खाते थे। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इसको क्या किया जा सकता है, इसको अग्नि पे पकाया जा सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ फायर वी कैन कुक द फूड। सो दे स्टार्टेड कुकिंग। आफ्टर कुकिंग दे केम टू नो दैट not only the this hunting
or this hunting material or food we can take, we can cook with the help of soil, with the help of fire. So they started cooking this grain, fruits, vegetables, and they what after that they found that it has good taste. So after that, so these plants are crop. These crops are produced. So from where these plants produce their own food? So it is from a sunlight with the help of this photosynthesis. But now, is it enough to produce a small scale crop, small scale grains? No, it is not sufficient. To fulfill the requirement of all this population, we need plenty of food, plenty of crops. We have to take a high yield of crop. So that's why we have to do the advanced farming. So now students, what is the crop? What is a crop? See, what is crop? Crop is nothing but it is a single variety. Single variety, you have to take a single variety. Like you have to take a single grain, like maize, wheat, paddy, anything. So single variety in a place. So place should be one. In a place at a time. So at a time in a single place, a single variety you have to sow. And what you do this in a single plot, in a single place, that is called as the crop. There are variety of crops. See, variety of crop. Variety of crops. But before this, understand, this variety of crops, these are produced on the basis of seasons. Okay? On the basis of seasons. Because in India we have variety of atmosphere. There are so many varieties of atmosphere. There are so many seasons. Near about 6 seasons we find, and mainly 3 seasons: winter, rainy season, and summer. Okay. So according to these seasons, crops are classified. How they are classified? See. So seasonal crops. Seasonal crops are of 2 types. One of them is Kharif and another one is Rabi. Okay? So Kharif and Rabi. What are these Kharif? What are these Rabi? See, this Kharif, this is produced in rainy season. In rainy season from June to September. From June to September. And we can say this Rabi we can produce from October to February. So Rabi, it is mainly produced in winter. Okay, student? Okay. So these Kharif plants, what are examples of Kharif plants? Kharif means these are produced in rainy season. It means they need more water. So more water requiring crops are paddy crop, wheat crop, no wheat. So wheat will come where? In Rabi. Okay, paddy crop, cotton crop, then groundnut, soybean. All these are crops which are produced in Kharif season. So that's why they are said to be Kharif plants. What are Rabi? So Rabi plants are different which are produced in winter. So winter में क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं वीट को. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे. वीट जो है ये रबी का है एग्जाम्पल. फिर हम इसमें प्रोड्यूस करते हैं पीनट्स. पी प्लांट्स भी इसमें लेते हैं. फिर इसी में मस्टर्ड भी यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं. तो इस तरह वीट, पीनट्स, मस्टर्ड ये सभी जो है ये रबी है. बिकॉज अभी हम ये जो पैडी है, व्हाई वी डोंट प्रोड्यूस इट इन रबी? बिकॉज इट नीड मोर वाटर एंड मोर वाटर इज इन अ रेनी सीजन. वेरी सिंपल. ओके, चलिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सीजन्स, बिकॉज देयर इज अ वेराइटी ऑफ एटमोस्फियर इन इंडिया, वी हैव वेराइटी ऑफ एटमोस्फियर. See,
Where does it vary? It vary in temperature. So temperature will be different. It vary in temperature. It vary in humidity. Okay. So on the basis of this all the situations and conditions, there is a different seasons, and that's why we produce different crops in a different season. So it is very important. Now, this crop production, how can we produce a crop? So what are the practices? What are the practices of crops that are done while doing this farming? Okay. So here are practices of agriculture, or we can say, so agriculture you can write. So what practice we do while planting, while cropping? Okay. So see, these crops, when they are grown, we have to go through multiple actions, or we can say multiple steps. What are these steps? See, very simply you have to keep in mind. See, these are, first one is preparation of soil. What you do before going for crop? Preparation of soil. You prepare a soil. Second one is, after preparing the soil, what you do? It is a sowing. You sow the seed into the soil. Third one is manures and fertilization. Fertilizers. So you add manures and fertilizers into the soil. Now, fourth is, so how you can keep it in mind? See, please send me important worksheet on hike. Your friend is a Sam. So you are asking a Sam to send you the important worksheet of a class. Okay. So this is Sam or Sam, you can say. So see, P means preparation of soil, S means sowing, M means manure and fertilization addition, I means irrigation. Then W means what you do here. Fifth is watering. Okay. Then is H. 6 means harvesting, not watering. It is weed removing, not watering. Watering comes under irrigation. So weed removal. Fifth one is harvesting. And last one, seventh one is storage. So from sowing, preparing the soil up to the storage of the grain, you have to go through all these steps to take your crop ready. Okay. So what you will see here, preparation of soil, sowing, manures and fertilization, irrigation, weed removal, harvesting and storage. So all these things we have to study one by one, stepwise. Okay, student. So up to this we studied that how the need of this agriculture or the farming came, why we do the advanced agriculture, then what are agricultural practices and what are the crop types. So we studied it today. So in the next lecture we will see how these steps are carried out. So which are the traditional methods, which are advanced and modern methods. Okay, student. So now what you have to do, from the book you have to make notes of all these up to the practices of agriculture. Okay, so read it properly from the book, and if you have any question, please ask me it personally. Okay, student. So thank you so much. All the best.